Assalamu alaikum students. Today I am going to talk about classical poetry short questions and their answer from Sarkodha University past paper MA English Literature Part 1। आप सब जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि सरगोदा यूनिवर्सिटी में स्पेशल तौर पे MA इंग्लिश में शॉर्ट क्वेश्चंस का एक जो पोर्शन होता है 20 नंबर का, ठीक है, 20 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पोर्शन होता है। वो बेसिक बुनियाद होती है। अगर आप वो अच्छे तरीके से हल कर लेंगे तो आप बाकी जो पार्ट्स है उसमें भी अच्छे मार्क्स अचीव कर लेंगे। अगर आप उस जो पार्ट्स है उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप दूसरा जो 80 नंबर का जो पार्ट है उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए जो वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को समझना और उनको हल करना बहुत ज़रूरी है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में से आप 20 में से 18 या 20 में से 20 या 20 में से 15 तक नंबर ले गए तो फिर आप तो 60-70 नंबर तक बड़े आसानी के साथ ले जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लासिकल पोइट्री शॉर्ट क्वेश्चंस 2021 से स्टार्ट करते हैं और 2015 तक 2021 से बैकवर्ड आएंगे। 2021 उसके बाद 20 फिर 19 फिर 18 फिर 17 फिर 16 फिर 15 तक आएंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं 2021 से। डिफाइन प्रोलॉग। प्रोलॉग इज़ एन इंट्रोडक्शन टू करैक्टर्स एंड इवेंट्स कंटेन्ड इन अ लिटरेरी वर्क, ठीक है। प्रोलॉग कहते हैं कि एक अदबी काम में वाक़यात और किरदारों का तारफ़ होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर इन प्रोलॉग टू कंटेम्परेरी टेल्स Chaucer introduces the characters who will narrate their tales when they set their carriages to Canterbury, ठीक है। कंट्रबरी की तरफ जब जो सारे किरदार होते हैं जो अपना अपना सफ़र करते हैं तो सब अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं, इसको कहते हैं प्रोलॉग। Where did the pilgrims stay on their way to Canterbury, ठीक है। कहते हैं कि अपने सफ़र कंट्रबरी की तरफ जाते हुए, हाँ, पिलग्रिम्स थे जो ज़ियारतें करने वाले थे, उन्होंने कहाँ पर जो स्टे किया, रुके। पिलग्रिम्स स्टेड एट टैबर्ड इन ऑन देयर वे टू कैंटरबरी, ठीक है। टैबर्ड इन कहते हैं कि हॉल, बड़े हॉल में उन्होंने कैंटरबरी जाते हुए जो स्टे किया। व्हाट वाज द टास्क एंथ्रस्टेड टू नाइट ऑफ रेड क्रॉस बाय फेरी क्वीन, ठीक है। नाइट जो थे उसको फेरी क्वीन ने कौन सी जिम्मेदारी सौंपी थी? क्वीन ग्लोरियाना एंट्रस्टेड जिम्मेदारी सौंपी द रेड क्रॉस नाइट विद द टास्क टू किल द फर्स्ट ड्रैगन। फर्स्ट कहते हैं खूनख्वार, ड्रैगन कहते हैं एक बड़ा सा जानवर। टू किल द फर्स्ट ड्रैगन। हु इज़ द शेफर्ड इन द वेरी ओपनिंग लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, बुक 1 पैराडाइज लॉस्ट की ओपनिंग लाइन में शेफर्ड कौन है? मोसिस इज़ द शेफर्ड इन एवरी ओपनिंग लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 में जो शेफर्ड है वो है जी मोसिस। मोसिस का मतलब मूसा अलैहिस्सलाम। हु वाज द नेक्स्ट टू सैतन इन पावर, पावर में शैतान से अगला कौन सा था? बुल्ज़ेबब वाज द नेक्स्ट टू सैतन इन पावर। व्हाट इज़ द एज ऑफ शेक्सपियर नोन एज, ठीक है। कहते हैं शेक्सपियर के ज़माने को कौन सा ज़माना कहा जाता है? द मोस्ट ऑफ द वर्क्स ऑफ अ शेक्सपियर बिलोंग टू विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ एलिजाबेथन एरा, ठीक है। कहते हैं कि शेक्सपियर के ज़माने को जो है वो एलिजाबेथन का ज़माना भी कहा जाता है। विच एज डिड जॉन डन बिलोंग टू, जॉन डन किस ज़माने से ताल्लुक़ रखते थे? द एज ऑफ जॉन डन लाइज बिटवीन शेक्सपियरियन एंड जैकोबियन पीरियड, ठीक है। कहते हैं जी कि जो जॉनडन था उसका जो टाइम पीरियड था वो शेक्सपियर और जैकोबियन के दरमियान था। व्हाट इज़ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग से क्या मुराद है? अ फिक्शनल एक फर्जी कैरेक्टर इन नावल और प्ले एक ड्रामा रिवीलिंग अबाउट हिज हिडन इंटेंशन टू ऑडियंस इज़ कॉल्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है। एक फर्जी किरदार नावल में या ड्रामे में
जो अपने खुफिया इरादे अपने आइडियंस को बताए तो उसे कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, कोई भी ड्रामा या नावल है उसमें कोई भी हीरो होता है जो अपने खुफिया इरादे, ठीक है, खुफिया इरादे जो है वो ऑडियंस को बताए तो उसको कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। इट वूज सजेशन डिड पोप राइट रेप ऑफ लॉक। ठीक है, कहते हैं किसकी तजवीज़ पर पोप ने रेप ऑफ लॉ को लिखा। पोप रोट दिस burlesque poem after being requested by his friend to reunite the families of Lord Peter and Lady Fermor। लेडी फर्मर और लॉर्ड पीटर की फैमिलीज़ को दोबारा से मुत्तहद करने के लिए अपने दोस्तों की दरख्वास्त पर अलेक्जेंडर पोप ने जो है रेप ऑफ लॉ को लिखा। हु हैज़ बीन कॉल्ड द फेयरेस्ट ऑफ मोर्टल्स इन द रेप ऑफ लॉक। रेप ऑफ लॉक में फेयरेस्ट ऑफ मोर्टल्स किसको कहा गया है? ब्लिंडा ब्लिंडा हैज़ बीन कॉल्ड द फेयरेस्ट ऑफ मोर्टल्स इन द रेप ऑफ लॉक। ठीक है जी, ब्लिंडा को कहा गया है, नावल की जो हीरोइन है। 2020 के आगे चेक करते हैं। व्हाट इज़ क्लासिसिज्म? क्लासिसिज्म ऑलरेडी आंसर्ड। डिफाइन मेटाफर्स ऑलरेडी आंसर्स। व्हाट इज़ मेंट बाय एलेगरी? ऑलरेडी आंसर्स। डिफाइन मेटाफिजिकल कंसीट, गिव एग्जांपल। A far-fetched comparison of common phenomenon to something beyond matter of universe to spiritual level can be regarded as metaphysical conceit. For example, when Jordan compare room in which he makes love with his beloved to whole earth, he is implying the metaphysical conceit। ठीक है जी, मेटाफिज़िकल कंसीट, मेटाफिज़िकल मतलब होता है कि फ़िज़िकल से दूर, मतलब कि रूहानी। कंसीट कहते हैं कि एक फ़र्ज़ी, दो चीज़ों का फ़र्ज़ी कंपैरिजन को कहते हैं जो है कंसीट। मेटाफिज़िकल कहते हैं जो मतलब इंसानी जिस्म से दूर हो। व्हाट इज़ मेंट बाई मोक एपिक? मोक एपिक से क्या मुराद है? ठीक है, एपिक तो कहते हैं कि एक लॉन्ग पोइम होती है जिसमें जो उसका हीरो होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, उसके अलावा जो उसकी लैंग्वेज वो भी बहुत शानदार होती है। लेकिन मोक एपिक कहते हैं ऐसी एपिक जिसका जो फ़नी हो, जिसमें मोक को मस्कड़ आड़ाया गया हो, क्रिटिसाइज़ की गई। मोक एपिक इज़ अ relatively long poem implying technique used in normal epic to present something trivial or grand। ठीक है, मामूली चीज़ों को जो है वो जो ज़ाहिर करने के लिए मोक एपिक को लिखा जाता है। Mention the characters associated with church in Chaucer Prologue to Canterbury Tales। ठीक है, Canterbury Tales में कहते हैं कि चर्च के साथ कौन कौन से करैक्टर जो है वो उसके साथ वो बसता थे। Character associated with the church in the prologue are parson, prioress, summoner and pardoner। Define cynical love। cynical love से क्या मुराद है? Already answered। What does red cross knight symbolize in fairy queen? ये जो already answered है ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, आपने इसको अच्छे तरीके से देखना, ये आगे इसका आंसर होगा। Already answered। What are the prominent traits of Shatan in Paradise Lost by John Milton? ठीक है जी, कहते हैं जो शैतान है उसकी क्या प्रोमिनेंट खसूसियात हैं। The prominent traits of शैतान are marked with his unconquerable will। उसकी जो विल है वो अनकरेबल है, उसको फतह करना जो है बहुत मुश्किल है। Eloquent oration, उसकी ज़ुबान जो है वो बड़ी प्यारी है, सादा है। एक्सेसिव प्राइड है, उसका बहुत ज़्यादा गरूर है। एंड डिसोबीडियंस, नाफरमाबरदारी। वाई डिड बैरन सीवर ब्लिंडा लॉक? बैरन जो है वो ब्लिंडा के जो बाल उसको क्यों काट देता है? ऑलरेडी आंसर्ड। डिफाइन ह्यूमर, गिव इलस्ट्रेशन। ह्यूमर से क्या मुराद है? वजाहत करें। ह्यूमर इज़ अ लिटरेरी डिवाइस विच मेक्स पीपल लाफ और
इंटेंड्स टू मेक देम लाफ। ठीक है, कहते हैं कि ह्यूमर एक अदबी डिवाइस होती है जिसका मकसद होता है कि जो अपने रीडर्स होते हैं उनको हंसाना, ठीक है, उनको लुत्फ़अंदोज़ करना। इट्स मेन पर्पस इज़ टू मेक रीडर रिलैक्स और ब्रेक हिज टेंशन। इसका जो मेन मकसद होता है वो है रीडर को रिलैक्स करना और उसकी टेंशन को तोड़ना। चासर इज़ अ ह्यूमरस, चासर जो है वो एक मज़ाक नगार है। मिसाल के तौर पर वाइफ ऑफ बाथ के हेड्रेस weight of 10 pounds is somewhat a humorous statement. Such a exaggerated statement makes people laugh. What is sonnet? Give examples. Sonnet is a 14-line lyrical poem in which poet expresses his emotion for someone or something. ठीक है, कहते हैं सोनेट 14 लाइन के लिरिकल पोइम होती है जिसमें शायर जो आप किसी के लिए हैं, किसी शख्स के लिए, किसी चीज़ के लिए अपने इमोशन को एक्सप्रेस करता है। एग्जाम्पल, व्हेन आई हैव फेयर्स बाय कीट्स, शैल आई कंपेयर दी टू समर डे। ये थी जी। डिफाइन ब्लैंक वर्सेस, गिव एन एग्जाम्पल। Blank verse is that kind of verse which is composed of a rhythm, rhymed mono-stitches, and usually follow the iambic pentameter's rhythmic pattern with 10 syllables in each line. Daylight changes and it is time to take. What is meant by alteration? Alteration से क्या मुराद है? Repetition of consonant sounds at the beginning of words is known as alteration. ठीक है, कहते हैं कि अल्फाज के इब्तदा पर गूंजदार आवाज़ों की तकरार अल्ट्रेशन कहलाता है। व्हाट इज़ बैलेट? गिव एन एग्जांपल। अ बैलेट इज़ अ स्टोरी इन वर्स अरेंज इन quatrains narrated through common person and noted by a highly skilled person is known as ballad. Example, Rhyme of Ancient Mariners by S.T. Coleridge. What is the aim of Paradise Lost? The aim of Paradise Lost is to justify the first disobedience of man, which was provoked by Shaitan to Adam and Eve, and which deprived them of paradise. Why is Spencer called the poet of poets? ठीक है, स्पेंसर को शायरों का शायर क्यों कहा जाता है? Spencer is called the poet's poet because of his innovation of Spencerian stanza, which is used by many eminent कहते हैं मशहूर poets including John Keats and P.B. Shelley. Mention 3 moods of love according to Jordan. जॉर्डन के मुताबिक प्यार के 3 ज़राए कौन कौन से हैं? 3 mood of love in Jordan poetry are cynical love, एंटी वूमेन के से मुराद है जो है वो स्पिरिचुअल, कंजुगल कहते हैं शादीशुदा, एंड प्लेटोनिक लव कहते हैं स्पिरिचुअल लव। हाउ मच इम्पोर्टेंस डिड ब्लिंडा अटैच टू हर लैब डॉग? ठीक है, कहते हैं कि अपने लैब डॉग को ब्लिंडा कितनी अहमियत देती है, ये उसके साथ कितनी अहमियत जुड़ी है। ब्लिंडा अटैच्ड इमेंस इम्पोर्टेंस टू हर लैब डॉग नेम्ड शोक। ये जो चीज़ है ये याद रखना अच्छे तरीके से। ये भी पूछा जा सकता है ब्लिंडा के डॉग का क्या नाम है? ठीक है, उसका नाम है शोक। एज एन अलार्म क्लॉक विच वुड वेक हर अप लाइक अ प्रिंस, जो उसे एक प्रिंस की तरह जगाएगा। थ्रू हिज स्वीट किसिस, अपनी मीठी मीठी किसिस के ज़रिए से। वाई वर पिलग्रम्स गोइंग टू कंटरबरी? ठीक है, कहते हैं हाजी जो है वो कंटरबरी क्यों जा रहे हैं? पिलग्रम्स वर गोइंग टू कंटरबरी एज अ रिलीजियस जर्नी टू श्राइन ऑफ St. Thomas Becket in order to say thanks for their successful trade of life even in presence of pestilence. Pestilence कहते हैं कहत। What is classicism? Classicism is implication of ancient Greek
है रोमन मैथोलॉजी एंड अ स्टाइल ऑफ आर्ट इन एन ऑथर वर्क। ठीक है, कि क्लासिसिज्म जो है वो एंशंट और रोमन की जो ग्रीक मैथोलॉजी है उसका जो इजहार होता है, और स्टाइल ऑफ आर्ट और आर्ट का स्टाइल इन एन ऑथर वर्क मुसन्नफ़ के काम में। व्हाट इज़ एपिक? An epic is a long narrative poem depicting heroic deeds of warriors and ancient gods in vast battlefield, which is entire universe in some cases composed in grand style to illustrate epic deeds of an epic hero. Define simile. Simile की तारीफ करें. Comparison of two objects by using word like or as, but these two words have different use cases. Like or as. This simile is used when a person or thing is as whole compared with other person or thing as whole. For example, Ali is like his brother. Ali अपने भाई की तरह. As. This simile is used when a specific quality of a person or thing is compared with another person or thing. For example, Ali is as honest as his brother. Ali ऐसा ज़हीन है जैसा उसका भाई है. What is heroic couplet? Heroic couplet is collection of two iambic pentameter monostaches which end on rhyming words. Heroic couplets are largely used by Chaucer and Shakespearean sonnets and in heroic couplet. What is sonnet? Already answered. Why were pilgrims going to Canterbury? Already answered. Who is called the poet's poet? Edmund Spenser. While rest of answer is who is called the champion of metaphysical poets? John Donne is called champion of metaphysical poet. What is the importance of Hampton Court? Hampton Court की क्या अहमियत है? In the Rape of Lock, the poet has asserted जोड़ दिया the fact that Hampton Court was an important place for state fair were discussed under Queen Anne taking tea. To which class does square represent? स्क्वायर किस जो है वो क्लास की नुमाइंदगी करता है? स्क्वायर रिप्रेजेंट द चिवेलरी. चिवेलरी कहते हैं जो बहादुर लोग होते हैं, जंगजू लोग होते हैं क्लास. येट ही स्टैंड फॉर इट्स डिक्लाइन. फॉर क्योंकि ही इज इंडल्ज इन प्लेइंग एंड कंपोजिंग म्यूजिकल नोट्स अनलाइक हिज फादर सर नाइट. और वो ये तो अपने अब्बा के बरक्स काम करना शुरू हो गया है, जैसे कि म्यूज़िक, उसके अलावा प्लेइंग जैसी आदतों में. हु इज़ प्रोफिशेंट इन हिज टेक्निक्स ऑफ वॉरफेयर. हु टेक्स पार्ट इन बैटल्स फॉर रिलीजन एंड कंट्री. एंड स्क्वायर हार्डली टेक्स पार्ट इन बैटल फॉर हिज ब्रदर. जबकि स्क्वायर जो है वो अपने लिए अपनी महबूबा के साथ. Explain, O cherub, to be weak is miserable. Shatan provokes his fallen angels to give an aftershock of defeat. God forbids, inflicted by sole emperor of heaven and paradise. He says to his companion that being weak and just lying in burning hell will not avenge their defeat. They have to do something. Define an epic. Already answered. Why were pilgrims going? Already answered. What does night red cross symbolize? Red cross night symbolize for virtue, holiness. Anglican church. Anglican church का मतलब इंग्लैंड का जो चर्च है. Define allegory. An allegory is a literary work which conveys a hidden moral, social and situational and historical ideas through living characters. What is cynical love? Cynical love is a scornful attitude toward persons, ideas, and things. So the cynical love is a vengeful temptation of person to his beloved to form an illicit or materialistic
रिलेशनशिप, ठीक है। साइनिसिज्म या साइनिकल लव ऐसा लव होता है जिसमें जो महबूब आशिक होता है अपने महबूब से इंतकाम लेने की खातिर उसे एवेंजफुल लव करता है। Define a style. Style is a literary device which is utilized to expose the follies of mankind through exaggeration, burlesque, humor, irony, ridicule. The main purpose of style is to reform human race. Define oxymoron. Two opposite words coined together side by side to give it distinctive and dramatic makeover from oxymoron. Define heroic couple. Why did Lord Peter serve Belinda Locke? Lord Peter was actual face behind Baron, who took part in cutting the lock of Arabella, a prominent personality of Roman Catholic Church, which created a rift of relationship between two families. That is why Lord Peter, allegorically association with Baron, served Belinda Locke. Why were pilgrims going to Canterbury? Already answered. Name three ideal characters in Prologue. There are three characters portrayed as an ideal in the Prologue, and these are Sir Knight, Clerk of Oxford, and Parson. Define allegory. Already answered. What does dwarf symbolize? Dwarf who has been carrying the luggage of Lady Yuna and articles of warfare of Red Cross. Knight symbolizes humility, for क्योंकि he serves under truth and holiness. If humility does not follow too, it will be denounced to hypocrisy. Originally answered by Sir Mawson. Why did Lord Peter serve Belinda Locke? Already answered. Define term metaphysical. Metaphysical is a philosophical term utilized in literature to elaborate things which are beyond the existence in physical world. This conception was mostly used in poetry in the 17th century. What is cynical love? Already answered. Define irony. Typically humorous in nature, expression of one meanings by using a language which normally signifies the opposite is known as irony. अर्निंग की मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ। अर्निंग का मतलब है कि इंसान का कहना कुछ लेकिन उसका मकसद कुछ होना। जैसा कि बच्चा जो है वो स्कूल में लेट आता है तो उस्ताद कहता है बड़े बच्चा बड़े टाइम पे आ गए हो आज तो उस्ताद का मतलब उसकी मीठी मीठी करना होता है, लेकिन बच्चा शायद वाकई समझ रहा होगा मैं टाइम पे आ गया हूँ। वाई डज शेक्सपियर कंपेयर हिज बिलव टू समर डे? ठीक है, कहता है कि शेक्सपियर अपने महबूबा को समर डे के साथ क्यों तशबीह देता है। शेक्सपियर कंपेयर्स हिज लव टू अ समर डे एज शी इज एज जेंटल एज द सनशाइन इज एज अ temperate as summer in United Kingdom and beautiful as the green fields and yielding summer. Define a style. Already answered. What was the plan of Canterbury Tales? It was planned that every pilgrims would have to narrate two stories while heading towards Canterbury. ठीक है, उनका ये टारगेट था कि अपने अपने मुकाम की जानब बढ़ते हुए जो सब हैं वो दो दो कहानियाँ सुनाएंगे एंड टू मोर स्टोरीज ऑन देयर वे बैक होम, और जब घर वापस आएंगे फिर दो कहानियाँ सुनाएंगे। द वन हु टोल्ड मोस्ट इंटरेस्टिंग टेल वुड बी रिवार्डेड विद डेंटी मेल बाई होस्ट। तो जो सबसे इंटरेस्टिंग कहानी सुनाएगा उसको जो है वो रिवार्ड दिया जाएगा डेंटी मेल बाई होस्ट। डिफाइन एलेगरी। ऑलरेडी आंसर। डिफाइन एपिक। ऑलरेडी आंसर। वाई वाज नाइट रेड क्रॉस अकम्पनिंग यूना? ठीक है, कहते हैं नाइट रेड क्रॉस जो है वो अपने साथ यूना को क्यों लेके जा रहा था। रेड क्रॉस नाइट वाज अकम्पनिंग यूना एज हर पेरेंट्स territory was confiscated by an evil and formidable dragon to free and land of Yuna parents from tyrant
clutches of dragon. Who was Archimago? Who was Archimago? Archimago was an evil magician in the guise old man old man who played monstrous tricks to demoralize Red Cross Knight to separate Yuna from Gentle Knight. Where did Belinda Locke finally go? Belinda Locke finally made its way to lunar world, comprising of sky and would shine as star as told by narrator of mock epic. Define wit. Wit is a literary device which is implied इस्तेमाल की जाती है to make readers and onlookers laugh. It falls back upon pun, conceit, paradox, and metaphor to outwardly praise but inwardly mocking of an idea, person, or a object. What is sensuous love? सेंसुअस लव से क्या मुराद है? Sensuous love. That kind of love which is celebrated physically and sexually. It is also known physical love. ठीक है जी. Why did शातन tempt? शातन ने क्यों तरगीब दी, क्यों उकसाया? शैतन Satan tempted Eva to eat forbidden fruit of knowledge to complete his revenge of being sent to deep hell for disobeying God. Right rhyme scheme of Shakespearean sonnet. Rhyme scheme of the Shakespearean sonnet is A B A B C D C D A E F E F G G G G.